The Union Ministry of Health and Family Welfare has revised guidelines for home isolation for very mild or pre-symptomatic COVID-19 cases. This comes after the Union Ministry tweaked guidelines for the discharge of COVID-19 patients. Here is what you need to know. The Union Ministry of Health and Family Welfare has issued fresh guidelines regarding home quarantine of COVID-19 patients. The guidelines pertain to very mild or pre-symptomatic COVID-19 patients. Under the new guidelines issued by the Union Home Ministry, a patient with mild or who is pre-symptomatic can end home isolation after 17 days of onset of symptoms or the date when sampling was done in pre-symptomatic cases. The quarantine period can end after 17 days provided the patient reports no fever for 10 days. The previous guidelines required a patient to end isolation only after the surveillance medical officer issues a certificate saying the patient is free of infection. Now, no tests are required to be conducted after the home isolation period is over. The ministry makes it mandatory for the caretaker and all those contacts of the patient to take hydroxychloroquine as a preventive medication. The Arogya Setu app should remain active round the clock on the patient's mobile phone. The revised guidelines also require the patient and caregiver to continuously monitor their health. They must seek immediate medical attention if they develop difficulty in breathing, persistent pain or pressure in the chest, mental confusion and bluish discoloration of lips or face. Those patients who are undergoing home isolation should strictly adhere to. उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना होगा, हमेशा ट्रिपल लेयर्ड मास्क पहनना होगा, एक आइडेंटिफाइड रूम में आइसोलेशन मेंटेन करना होगा, वह जो एल्डरली हैं या जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं या और फैमिली मेंबर हैं उनसे दूर हैं, हेल्थ हाइजीन मेंटेन करें और अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करें. On Saturday, the Union Health Ministry changed the discharge policy for patients of COVID-19. According to the new policy, RT-PCR test will not be conducted on patients with mild symptoms upon their discharge. कई देशों ने एविडेंस के बेसिस पर अपनी डिस्चार्ज पॉलिसी में टेस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी के बदले सिम्टम बेस्ड स्ट्रेटेजी और टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी का बदलाव किया है. उसके तहत ही इसमें हम चेंज लाए हैं. साथ ही आईसीएमआर के लैब सर्वेलेंस डेटा रिव्यू के अनुसार भी RT-PCR पॉजिटिव केसेस पेशेंट्स 10 दिन बाद नेगेटिव टर्न हो जाते हैं. रिसेंट स्टडी से यह भी पता चला है कि वायरल लोड पीक इन द प्री सिम्टोमैटिक पीरियड यानी कि सिम्टम से 2 दिन पहले और अगले 7 दिनों में नीचे चला जाता है. ये डिस्चार्ज पॉलिसी होम और फैसिलिटी क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए नहीं है. According to experts, 80% of the patients need supportive treatment and only around 15% of patients require oxygen therapy with other drugs. A News 9 report.